Hello, my dear student of class 12 science. How are you? Now, today we will discuss, as you know, that in previous video we already discussed about the concept differentiability, but some students have a problem in differentiability, that how to check out the differentiability regarding to a function whenever a point is given in the question. So, we have some questions based on the differentiability in this video, and I will tell you that how we can check out a differentiability regarding to a function at any point. So listen carefully. Clear? So first of all, you have to remember that in differentiability we have to check out the left hand derivative value as well as right hand derivative value. For left hand derivative and right hand derivative, we have two formulas separately. In left hand derivative, we use some concept from the LHL, and right hand derivative we use some concept from RHL. ठीक है, आपको पता होगा जो हम निकाल रहे थे लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, तो वहाँ पे एक फॉर्मूला था लिमिट h अप्रोचिंग टू जीरो वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट a माइनस एच एंड लिमिट h अप्रोचिंग टू जीरो वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट a प्लस एच। तो वो हम a प्लस एच और a माइनस एच यहाँ पे यूज़ करेंगे। जब हमारे पास में LHD निकालेंगे मीन्स लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो हम एफ ए माइनस एच यूज़ करते हैं और डिनोमिनेटर में आता है माइनस एच। लेकिन जब हम निकालते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव, तो उस वक्त हम एफ ए प्लस एच यूज़ करते हैं और डिनोमिनेटर में आता है प्लस एच। ये बात आप याद रखें। सो whenever we have a function at a point, then we have to go for left hand derivative and right hand derivative, and if the value of both these are equal, then we have to write down that the function at this point is differentiable. But whenever left hand derivative and right hand derivative both are not equal to each other, then we have to write down that function is not differentiable at this point. Clear? Suppose a function have a branch, means जैसा आप देख सकते हैं on the top of this paper as on your screen. In this question, fx equals to, this function has two branch, one of them for x less than equals to 1 and another for x greater than 1. So whenever x is less than 1, means suppose x is 0, minus 1, minus 2, minus 3, means I am talking about the negative field, means negative real numbers. So whenever x is less than 1, then we have minus 1, minus 2, minus 3 and so on, and at that time the function is x plus 5. But whenever x is greater than 1, like 1.5, 1.7, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5 and so on, then function has its value as x minus 5. So according to the situation, we have to use these values of the function. Clear? So left hand derivative at x equals to 1, limit, first of all we have to write down the formula. Clear? It is necessary in the question. Limit h approaching to 0 value of the function at a minus h minus fa upon minus h. It is the formula of left hand derivative. Now replace the a by 1. So we have limit h approaching to 0 value of the function at 1 minus h minus f1 upon minus h. In denominator we have minus h, remember it. But in right hand derivative the denominator is positive h. So f1 minus h minus f1 upon minus h. Now calculate the value of the function at 1 minus h. Basically
check out that where 1 minus h lies. Actually 1 minus h is the value which is less than 1. However, h is a very small value like 0.0001, but whenever we subtract this small value from 1, then resultant value will be less than 1. So we have to go the first branch of the function, which is x plus 5. And now in this branch x plus 5, replace x by 1 minus h. And so the value of the function at 1 minus h is 1 minus h plus 5 minus, now calculate the value of the function at 1. In first branch, x is less than as well as equals to 1. Clear? So calculate the value of the function at 1. Now value of the function at 1 is 1 plus 5, because in first branch x is less than but also equals to 1, and at that time the value of the function is x plus 5. So replace x by 1 and we have 1 plus 5. So 1 plus 5 is the value of the function at 1, and which is 6. Clear? Now after solving this step, we have to move another step, and which is limit h approaching to 0 minus h upon minus h, and after solving this we have 1, and 1 is totally independent, means it doesn't contain any variable h. So 1 is the value of left hand derivative of the given function at 1. Now we calculate the value of right hand derivative, means RHD, at x equals to 1. So first of all we have to write down the formula, and formula is limit h approaching to 0, value of the function at a plus h minus f a upon h. Now replace the value of a, and a is 1. So limit h approaching to 0, value of the function at 1 plus h minus f1 upon h. Value of the function at 1 plus h, basically 1 plus h means greater than 1. Clear? So 1 plus h means a value greater than 1. Now calculate the value of the function at 1 plus h. 1 plus h means greater than 1, and whenever x is greater than 1, then value of the function is x minus 5. Clear? So in x minus 5, replace the x by 1 plus h. So 1 plus h minus 5 minus value of the function at 1 is 1 plus 5. Solve this, and after solving this we have limit h approaching to 0, h minus 10 upon h. Now replace the value of h, means 0. We have infinite. Clearly left hand derivative is not equals to right hand derivative. So function is not differentiable at x equals to 1. Now next question. Fx equals to 2x plus 3, 2x minus 3. First branch means first value of the function is whenever x is less than equals to 2, and the second value of the function 2x minus 3 is the value of the function whenever x is greater than 2. Clear? So we have to check out the differentiability at x equals to 2. So left hand derivative at x equals to 2 means limit h approaching to 0, value of the function at a minus h minus f a upon minus h. Now replace the value of a, which is 2. So we have limit h approaching to 0, value of the function at 2 minus h minus f2 upon minus h. Calculate the value of the function at 2 minus h.
एंड 2 माइनस एच मीन्स बेसिकली लेस देन 2, क्योंकि जब आप एच को माइनस करेंगे 2 में से और एच अपने आप में कितना भी स्मॉल क्यों ना हो तो वैल्यू ओबियसली 2 से कम होनी है. सो वेन एवर एक्स इज लेस देन 2 देन वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज 2x plus 3. So in 2x plus 3 replace x by 2 minus h and calculate the value of the function at 2 minus h. इसको सिंप्लीफाई किया और आफ्टर द सिंप्लीफिकेशन वी हैव अ 1 and 1 is totally constant value means independent from the h. So limit h approaching to 0, 1 equals to 1. So left hand derivative value is 1. Now right hand derivative at x equals to 2. Limit h approaching to 0. Value of the function a plus h minus f a upon h. Clear? Equals to limit h approaching to 0. Value of the function at 2 plus h minus f2 upon h. f2 plus h means greater than 2. So whenever x is greater than 2 then value of the function is 2x minus 3. So replace x by 2 plus h. So 2 time of 2 plus h minus 3 minus f2. f2 means the value of the function at 2. Clear? So 2 time of 2 plus h minus 3 minus 2 into 2 plus 3. So result is limit h approaching to 0, h minus 6 upon h, and which is infinite. Clear? So clearly we observe that left hand derivative is not equals to right hand derivative. Left hand derivative is 1 but right hand derivative is infinite, so left hand derivative is not equals to right hand derivative. So the given function is not differentiable at x equals to 1. Clear? So in this way we have to check out the differentiability regarding to a function. Remember it. Process is very simple. You should learn a formula of left hand derivative and right hand derivative. Both have its own formula. Whenever you want to talk about the left hand derivative, then use the formula of left hand derivative and replace the value of a. A may be 1, 2, minus 1 and so on. So replace the value of a by given value. Suppose it is 1 or minus 1, it's depend upon the question. As you can see that in the screen page, first question which is on the top of this page, a is 1, and in the second question on the lower side of this page is a is 2. Clear? So a will be changed according to the situation. So put the value of a in left hand derivative and right hand derivative, and after that calculate the value of the function at 1 minus h, maybe 2 minus h, maybe 3 minus h, maybe minus 3 minus h, whatever it may be. So we have to calculate the value of left hand derivative as well as right hand derivative. If left hand derivative and right hand derivative both are same, both have the same value, then we have to write down that the given function at this point is differentiable. But if left hand derivative is not equals to right hand derivative, then we have to write down that the given function is not differentiable at the given point x equals to, आपको जो भी पॉइंट दिया जाएगा वो आप यहाँ पे लिख देंगे. क्लियर? सो इस तरह से आप क्वेश्चन करेंगे. चलिए इसके बाद मैं और क्वेश्चन लेके चलता हूँ.
क्वेश्चन देखिए आप, आपकी स्क्रीन पर एक पेज है और उसमें इस पेज पर दो क्वेश्चन है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसकी दो ब्रांच हैं और उसकी जो फर्स्ट ब्रांच है वो तब है जब x 2 और 2 से लेस है, और सेकेंड ब्रांच तब है जब x 2 से ग्रेटर देन है। So we have to calculate the left hand derivative and right hand derivative according to their formula. And a is 2. In left hand derivative we have to use the formula left limit h approaching to 0, value of the function at 2 minus h minus f2 sorry, fa minus h minus fa upon minus h, and value of a is 2, so this will become f2 minus h minus f2 upon minus h. Now calculate the value of the function at 2 minus h and put here, and then calculate the value of the function at 2 upon minus h. Minus h will be remain unchanged. 2 minus h means less than 2, and whenever x is less than 2, then value of the function is 2x plus 3. So replace x by 2 minus h. So we have 2 times of 2 minus h in third row of this page from the top. 2 into 2 minus h plus 3 minus value of f2. x is equals to 2 in the first branch when the value of the function is 2x plus 3. So replace x by 2 minus h, and we have 2 times of 2 minus h minus 3 plus 3 minus 2 into 2 plus 3 upon minus h. After solving this we have a simply 2. So value of the function at 2 is 2. Right hand derivative of the function at 2. First of all, write down the formula limit h approaching to 0, value of the function at a plus h minus fa upon minus positive h. Here a is 2, so value of the function at 2 plus h minus f2 upon h. Value of the function at 2 plus h is 2 times of 2 plus h, because function is 2 times of x from 3 to 8, 2, ठीक है। सो इस तरह से राइट हैंड डेरिवेटिव हम निकालेंगे और इसको सोल्व किया, सोल्व करने के बाद में इसका आंसर आ रहा है इनफाइनाइट, एंड क्लियरली लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव, सो फंक्शन विच इज गिवन टू यू एट द सेम पॉइंट 2 इज नॉट डिफरेंशिएबल, बिकॉज ये बात आप ध्यान रखें, left hand derivative and right hand derivative play an important role in the process of differentiability. Clear? चलिए इसके बाद लोअर साइड पर आइए आप इस पेज की, जहाँ पे क्वेश्चन लिखा है और इस क्वेश्चन में कोई ब्रांच नहीं है। इट मीन्स सामने लिखा है पॉइंट 5 से पीछे हटें मीन्स लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और 5 से आप आगे चलें मीन्स राइट हैंड डेरिवेटिव। सो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 5 प्लस h minus f5 upon minus h. So whenever we want to calculate the left hand derivative and right hand derivative in a function in which we have a single branch, not a double, not a triple, a single branch, then we have to go for this process.
whenever function is x minus 5, then value of the function at 5 will be 0, and value of the function at 5 minus h will be replace x by 5 minus h. So limit h approaching to 0 1 equals to 1. सो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू आ चुकी है 1, एंड राइट हैंड डेरिवेटिव आएगा x इक्वल्स टू 5 पर 1. कैसे? सबसे पहले तो आप इसके लिए फॉर्मूला लिखेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए, और फॉर्मूला होता है लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट a प्लस h माइनस एफ ए अपॉन h. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ a एंड विच इज 5. So value of the function at 5 plus h minus f5 upon h. Value of the function at 5 is 5 plus h minus 5. Value of the f5 equals to 0 upon h. So limit h approaching to 0 1, and 1 is a constant function which is independent from the h, so it will be 1. In this way left hand derivative is equals to right hand derivative, so the given function x minus 5 is totally differentiable at 5. ठीक है, तो इस तरह से आपको मैंने समझा दिया है प्रोसेस ऑफ डिफरेंशियबिलिटी. ठीक है, बस डिफरेंशियबिलिटी में आप एक बात याद रखें कि जब भी आप डिफरेंशियबिलिटी निकाल रहे हैं तो आपको एक फंक्शन दिया जाएगा, पॉइंट भी दिया जाएगा, तो आप उस पॉइंट के लेफ्ट में मीन्स उसे पीछे हटेंगे. a माइनस एच, ए प्लस एच, इन दोनों को यूज़ करेंगे आप LHD और RHD में. ठीक है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए फॉर्मूला होता है कि लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट a माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच. बट इन द केस ऑफ RHD फॉर्मूला इज लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट a प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच. क्लियर? अब इसके बाद में आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे. लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों को निकालने के बाद आप इनकी वैल्यू चेक करेंगे कि वो वैल्यू आपस में इक्वल है या नहीं है. इफ़ बोथ वैल्यूज़ आर इक्वल टू ईच अदर देन फंक्शन इज़ टोटली डिफरेंशिएबल at that value. But whenever values are different, then function is totally not differentiable at the same point. तो इस तरह से टॉपिक आपका फिनिश हो गया है. इसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे, और इस वीडियो में हम अभी इतना रखेंगे, बाकी डिस्कस करेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में. तो तब तक आप क्वेश्चन करते रहें, क्वेश्चन निकालते रहें, हेल्प बुक से भी हेल्प लेते रहें, NCERT से भी क्वेश्चन करते रहें, लेकिन नोट्स बनाते रहें. किसी तरह कोई भी ऐसा काम ना करें कि आपको आगे जाके प्रॉब्लम हो. क्लास जिसकी भी होती हैं, जो भी वीडियो भेजते हैं, उन सभी को देखें नॉलेज लेने के लिए. क्लियर? क्योंकि आपको करना है नॉलेज के लिए. क्लास 11th में आपका सिलेबस कुछ कट हुआ था. ठीक है, अब 12th में अभी तक कोई डिक्लेयर नहीं हुआ है, फुल सिलेबस चल रहा है. और ध्यान रखना है कि आपको अपना जो टास्क है, जो वर्क है, वो डे बाय डे डेली करना है. उसको कल के भरोसे छोड़ के नहीं चलना है. ठीक है, और यदि किसी बच्चों को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे फ़ोन कॉल कर सकता है, व्हाट्सअप कर सकता है. एनी प्रॉब्लम यू कैन डिस्कस एनी टाइम. चलिए, बाकी हम डिस्कस करेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में.